a shocking story and a massive scandal that's emerging out of Ranchi, where a nun, a Catholic nun, has been arrested for allegedly selling babies. The nun, who's part of the Missionaries of Charity, the organization founded by Mother Teresa, has allegedly been linked to a racket selling babies, which has now come out in shocking developments. Now, as per the details that are emerging, and details are emerging at this point, we have our reporter on her way to Ranchi to give us details. But in the meantime, this is what we know for sure. 4 babies were allegedly sold. Out of them, 1 has been recovered and rescued. In fact, the police have also tracked down the second missing child, but that child has not been recovered. What remains to be seen is just how big the racket is, if more people from that organization have been involved. Our reporter Tamal Chakrabarti is standing by in Calcutta at this point. The Missionaries of Charity are headquartered in Calcutta, and we also know that the responses from the official responses of the Missionaries of Charity have come out of Kolkata at this point. Tamal, if you could take us through what responses you're picking up from Kolkata? This is possibly for the first time Missionaries of Charities is caught in a controversy involving alleged child trafficking. How it all started? It started after the administration of Jharkhand had commissioned a probe to be conducted by Child Welfare Commission and Child Development Office, two independent offices, to jointly conduct an investigation and find out a report as how are these shelters doing, how are these child homes doing, are they following all the procedures, the protocols for the safety, are they hygienic enough for the child safety. So this was the idea behind the probe that was commissioned by the Jharkhand administration. At least that's what they're claiming. According to Jharkhand police, incidentally around the same time, they came across a complaint on 30th of last month, a complaint that was lodged by a family from UP. That family claims that they had allegedly bought a child from Missionaries of Charity. A transaction of money had happened, a transaction that was facilitated by this nun who is now in detention, who has now been arrested by Jharkhand police. Now they are claiming, the family is claiming, that had apparently gone for adoption from Missionaries of Charity, that they were called by Missionaries of Charity this year and they were asked to come back to Ranchi for the completion of some formalities. And after they came back to Ranchi, the child was taken away from them without any clarification, and no confirmation was given to them whether the child would be given back to them. In lack of clarity, they have now approached the Jharkhand police. They have lodged a complaint. So it's, yes, there is an independent probe which is being done by Child Welfare Commission and Child Development Office. At the same time, there is a probe which has also been lodged by Jharkhand police based on a complaint. Both things put together, it is an investigation which has come up with some shocking revelations. We do know 1 nun has been arrested, and we also spoke with the spokesperson of the Missionary of Charity headquartered in Kolkata. She tells us the charity is shocked and they're going to cooperate with all investigations. Listen in. Firstly, it was a shocking happening. We can't still believe that it's happened. And of course, I mean, the arrests, I know that they happened, but I think 1 sister was released, and maybe 1 more sister is still in the lock. And but we can't believe that the sister was cooperating. It's not possible. It's, I mean, it seems like a story to me, but it's, even though everybody is saying whatever, but Missionaries of Charity, this is totally against their moral convictions. And how it has happened and why Jharkhand? I mean, there are so many other homes all over the world, but it's funny that it's happened there. देखिए, बच्चे वाले मिशनरीज वाले में जो ये घटनाक्रम प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश के एक दंपति के मामले को लेकर के, उस मामले में 4 बच्चों के बेचे जाने की बात सामने आई। एक उत्तर प्रदेश में, 2 रांची में और 1 सिमडेगा में। तो उत्तर प्रदेश वाला बच्चा तो यहाँ आ गया, बरामद हो गया है। रांची का एक बच्चा बरामद हुआ है और एक सिमडेगा का अभी उस ट्रेस उसका पता चल गया है। एक बच्चे का भी पता नहीं चला है।
यह बात प्रकाश में आई कि कुछ राशि लेकर के 1,20,000 रुपये लेकर के उत्तर प्रदेश के दंपति को बच्चा बेचा गया था। इसी क्रम में यह जांच प्रारंभ हुआ है। 2016 तक के रिकॉर्ड अभी मिले हैं आयोग को। 121 ऐसे नवजात शिशुओं के संबंध में उसमें उल्लेख है, जिसमें 24 बच्चों के बारे में अभी तक वो कहाँ हैं वो अभी ट्रेस नहीं हुआ है। वो अनुसंधान में उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में विभिन्न जिलों, झारखंड के विभिन्न जिलों से यहाँ पे कुंवारी माओं का मतलब को शेल्टर दिया जाता है, कुंवारी माओं को। इसी सिलसिले में कल हमारे कार्यालय में एक महिला आई कि हमने मिशनरीज ऑफ चैरिटी से एक बच्चा खरीदा था 1,20,000 में, जो हमसे वापस ले लिया गया और अब हमने वापस नहीं दिया। ये शिकायत लेके कल बाल कल्याण समिति में एक महिला आई थी, जिसके बाद जांच के बाद पाया गया कि अनीमा नाम की इनकी स्टाफ, सिस्टर कौंसिलिया नाम की एक सिस्टर जो इसमें इन्वॉल्व थी, उन लोगों को हम लोगों ने फिर पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान अनीमा ने बताया कि हाँ, ये पहले भी ये घटना हो चुकी है, इससे पहले भी 50-50 हज़ार में 2 बच्चे को रांची कहीं काटाटोली और मोराबादी नामक जगह में बेचा गया है, और ये तीसरा केस था। और 2 का उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे और भी बिके हैं। ये 100% दूध की तरह सही है और स्वच्छ है कि मिशनरी ऑफ चैरिटी ने बहुत सारे बच्चों का सौदा किया है, और आप देखेंगे जांच में परत दर परत खुलते रहेगी, और बहुत सारे बच्चे रिकवर आज भी हुए हैं। एक बच्चा सिमडेगा से, और मतलब बहुत लोग इसके पीछे हैं, सफ़ेद पोस्ट लोग भी, जो कि इनको संरक्षण दे रहे हैं। हम लोग शुरू से इसका आवाज़ उठाते रहे हैं कि मिशनरी ऑफ चैरिटी यहाँ बच्चों की सौदा कर रही है। एक बड़ी बात है कि जब भारत सरकार ने जब ये इस पूरे सिस्टम को, एडॉप्शन सिस्टम को ऑनलाइन किया, तो पहला Well, the story is still developing. Like I told you, we have a reporter on her way to Ranchi at this point. But the response that we're just getting breaking news from the missionaries of charity that are apparently appointing a new spokesperson tonight. Tomorrow onwards, Sunita Kumar, who you just heard, gave us that atrocious statement saying that it is funny that this has come up in this one particular, agency because they have homes across the world. Why this one? And she said some fairly insensitive things. She has been removed as spokesperson. She will be replaced tomorrow because she failed to put forward the point of the institution. Tomorrow, the Missionaries of Charity will issue a new statement by the first half. As that's the information that we're getting right now. But in a breaking story that's coming in, our news editor Tanvi Shukla spoke with the former chairperson of the Child Welfare Committee in Ranchi. He tells us that he raised several alarms and wrote several letters to the Women and Child Welfare Committee, but no action was taken with this one particular orphanage. Listen in. उस दिन जो हम गए, हमको इंटीमेशन सेक्रेट मिला कि वहाँ पर खरीद हो रहा है, थोड़ा सा जाइए देखिए। तो हम गए तो वहाँ पर उन लोगों ने, जो सिस्टर हमारे ऑफिस में हमेशा आए थे, मैंने जब हम गए उसके 2 ही महीना पहले हम अपॉइंट हुए थे। हम जनवरी 2014 में गए थे, हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था अक्टूबर 2013 में जी। तो वो जो वहाँ की जो ये थी मेन केयर टेकर जो सिस्टर थी नीमा रोज, उसके पहले भी हम मिल चुकी थी, जो मेरा ऑफिस था रांची में डब्ल्यूसी के ऑफिस में हमसे मिल चुकी थी। लेकिन वहाँ पर जब हम गए तो एकदम बिहेव लाइक एकदम बिल्कुल मैंने नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी, he started shouting, how did you dare to come? Nobody, no CWC earlier were coming. आप कैसे आ गए यहाँ? ये सब दिस दैट हम स्टंट थे। हम ये क्या हो रहा है? हमें क्या आपको देखने आए हैं? कह नहीं, आप कैसे देख सकते हैं? आप खिलाने को लाइए था। मैंने बिल्कुल हमको जाने ही नहीं दिया। तब हम एकदम बिल्कुल हमारा सस्पिशन और बढ़ गया, जरूर बात है, मामला कुछ और है। तो हमने आके रिपोर्ट कर दिया चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड केयर कमीशन के चेयरमैन को, स्टेट गवर्नमेंट का कमीशन होता है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट को, और लिख के दे दिया इसका पूरा इंक्वायरी कराइए जी। और तब तक के लिए हम चाइल्ड एडॉप्शन सेंटर का जो उन लोगों का एडॉप्शन सेंटर का जो लीगल फ्री करने का जो ये था, उसको सस्पेंड कर दिए। हमें जब तक इंक्वायरी नहीं होगा कोई बच्चा को हम इधर उधर नहीं जाने देंगे। जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तब
यही हुआ, हमको करने ही नहीं दिया गया। कि आज जो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें 4 बच्चों की बात हो रही है कि 4 बच्चों को शायद बेचा गया। आपको लगता है कि ये उससे भी बड़ा ये रैकेट हो सकता है? 4 बच्चा को कहाँ बेचेगा, बहुत बच्चे को ये लोग मिलकर बेचा है। ये इंक्वायरी का विषय है। हम तो माननीय हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन मैंने हम फाइल किए थे कि इस पूरा जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। वहाँ भी अभी भी सब उसका रिकॉर्ड्स वगैरह होगा। तो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हमने बोला था 4 बच्चे नहीं है, ये बहुत से ब्यूरोक्रेट्स वगैरह मिलके इसके मलेशिया से रिटायर्ड जज ये सब मिलके ये सब काम किया है। और अगर उस समय पकड़ा गया होता ना, ये लोग पेट्रोनाइज नहीं किया होता, तो आज इतने बच्चे नहीं इन्वॉल्व होते। Like I said, that story is developing and there are more details emerging out of Ranchi, and we will bring you updates as and when they happen. But that shocking story, this is what we have so far. One nun has been arrested. Of the 4 children that were confirmed sold from the missionaries of charity Nirmal Hriday in Ranchi, 1 has been recovered and brought back. The police have identified or found out where the 2nd child is. The rest are yet to be known. The big question that we have to ask is this: how much bigger is this scandal really? This is human trafficking, this is POXO, this is very, very serious. There were reports that surfaced there could have been 280 children that were sold altogether. The police, as we spoke with them, are still verifying those details, and we will bring you those details as and when they are verified. And we continue to keep a very close eye on this very, very serious matter that we understand the Ranchi police is taking very seriously. Of course, there is a call now for a judicial inquiry as well, and if that is granted, we will give you that update.